दिस इज समीना शेख हियर ऑन माय स्पेशल शो स्ट्रीट डायरीज और मेरे साथ में आज है scintillating, vivacious, vibrant actress Pragya Jaiswal. So join me as I welcome her and we are going to talk about food, lots of gupshup और बहुत कुछ about your work. Amazing. Let's go. Let's do it. So Pragya, as you could see कि हम लोग अगर खाने को सामने आपके प्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ खाने के बारे में कॉन्वर्सेशन होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट food, about your love for food and how do you control your love for your food to maintain yourself. तो ये प्रज्ञा कैसे एज एन एक्ट्रेस डाइट नहीं करती है? मतलब डाइट नहीं करती हूँ, मैं सब खाती हूँ. आई डोंट रियली रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ, आई डोंट स्टार्व माई सेल्फ, आई जस्ट आई एम समबडी हु लव्स टू ईट हेल्दी एंड आई लव फूड. आई एम नॉट समबडी हु एन्जॉयज fried food, junk food, chips, cookies. I'm just not that girl. But खाना मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ. And if I want to eat sweets and if one day I want to indulge, I indulge very happily. And I don't balance it out. I eat. You have started off your journey, from, down south. And coming from that side, which also means कि खाना ही खाना. तो आप वैसे क्या करते थे and वहाँ पे क्या varieties होती थी, for your food? See, actually, in the south, we get food from production, which is that typical Andhra food where for breakfast you will get like everything from idli, dosa, pesarattu, pongal. It is delicious. It is indulgent. It is yummy. And वहाँ पे क्या होता है ना कि आप बहुत सुबह उठ जाते हो. वहाँ पे यूजली 6 to 6 कॉल शीट रहती है, तो आप 6 o'clock you're on set, you end up waking up at 4 or 5. तो इतने जल्दी उठते हैं ना तो बहुत तेज़ भूख लगती है. बाय 8:30 you're so hungry. तो in the morning if you eat well, it's good. In the morning you don't have to restrict yourself at all. तो morning में तो I eat proper अच्छे से, everything. So breakfast is always, when I'm working in the south, it's the biggest meal for me. And then obviously lunch is it has like sambar and rasam and rice and whatever green vegetables and chicken or mutton, whatever is cooked depending on if you're vegetarian or not. So I actually enjoy eating the food that comes, like the production food. It is very, very yummy. But obviously, like if for example for a certain film, if I have to lose weight, then I can't really eat itna अच्छे से. Then I have to kind of follow thoda sa, like then you have to have your protein and fibers. Then you eat said food thoda less and eat your actual food. For one film, I remember I had put on too much weight. So when I was also doing a Hindi film at the time. So Hindi film mein they wanted me to lose weight and तेलुगु फिल्म में they wanted me to be heavier. So it was so difficult कि मुझे वो शूट करते करते जब that shoot was getting over, I had to become a little bit leaner. तो वहाँ पे फिर मैंने काफ़ी दिन सेट फूड छुआ नहीं था. I used to be so tempted, but I was just sticking to my fish and veggies and all of that. तो वैसा कभी कभी करना पड़ता है, but mostly as much as possible, I love eating the food that comes on set, the production food. It's delicious and it's amazing. और डिलीशियस की बात करें तो मैंने आपके लिए कुछ एक हेल्दी फूड आइटम मंगाया है. दिस वन इज avocado sushi, बट दिस वन इज green pav bhaji, and I don't know whether you have ever had green pav bhaji. I've never had green pav bhaji. What is green pav bhaji? Green pav bhaji is more of veggies, more of green peas, less of potatoes and all, because वो थोड़ा heavy हो जाता है. So वो ये सब का mixture है. And I was like, put it in the pav and have it. You can just like have the pav and then you can also separately. There is this myth that South में they expect their actresses to be healthy, to be having like some good weight, good weight on them, rounded in shape. जो Bollywood में कई बार they want to be in a certain shape. Have you faced that? Have you heard about that? And how things are? See, I think it really depends on the film that you're working on, the character that you're playing. So yeah, I mean, there they like a different body type, I think. Okay. But यहाँ पे भी, I mean, but it's not the same anymore. Now you see all South actresses, everybody is super fit.
You know, everybody is working out, eating healthy. So now it's just about, I think, staying healthy. If you're staying healthy, looking good, fresh, beautiful, that's all that matters. You don't have to be fat. और ब्यूटीफुल दिखने के लिए एक और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, विच इज़ आई थिंक द मसाला चाय. एंड प्रज्ञा एक्सप्रेस्ड हर लव फॉर मसाला चाय एंड आई वुड रियली वांटेड टू ट्राई द मसाला चाय नाउ. This was supposed to be a secret. We're This doing is the this for best secret. everyone. तो प्रज्ञा, आपने अंदाज अपना अपना फिल्म देखी है? क्या आपको डायलॉग याद है उस फिल्म का? कौन सा वाला? दो दोस्त एक कप में चाय पिएंगे. प्यार बढ़ता है. नहीं, हम सिर्फ cheers करेंगे. अच्छा, चीयर्स करेंगे. क्योंकि मैं चाय बिल्कुल नहीं शेयर करने के मूड में हूँ. Cheers. Cheers. So desi we are. We are desi by heart. Masala chai. Desi by heart. But I have to ask you, Pragya, how many years of staying in Mumbai and what is that, you enjoy the most about Bombay? अरे यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज आई लव बॉम्बे. आई लव बॉम्बे फॉर नंबर वन द पीपल. I have lived in so many different cities before coming to Bombay, but I feel like Bombay has such a nice and warm embrace to it कि जो भी आता है ना बॉम्बे एक्सेप्ट कर लेता है. आई फील उन लोगों को पीपल आर सो हेल्पफुल, सो काइंड, सो लविंग. ये मैं उस टाइम की बात बता रही हूँ जब मैं बिल्कुल नहीं थी. जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे में आई थी, आई जस्ट फेल्ट लाइक पीपल आर सो हेल्पफुल इन दिस सिटी. सो आई फील द नंबर वन इज़ द वार्मथ. You don't feel like you're an outsider. You feel like you're a part of the city. So that is my most, I think that's the most important thing about Bombay that I love. And then other than that, I work here. I'm living my dream life over here. I do what I love, which is acting in films, doing so many other things related to, my like ads and endorsements. And I started modeling over here. So I started my career over here, which is why Bombay is even more special. So number one, the people. Number two, my industry is here. So very, very happy and grateful for that. And other than that, I think the madness, the pace of life, everything is so fast. And as much as there's a slight negative side to it, that everything is so cutthroat and there is competition and you've got to go for it, I feel this city keeps you on your toes. There is no space for you to be laid back or relaxed or be lazy कि हो जाएगा देखते हैं, option ही नहीं है. You've got to be your best every single day, put your best foot forward. And I think that's the third thing I like. I like the madness and the hustle of this city. It's amazing. The hustle, I think, not the madness. The hustle is amazing. But I have to also ask you this, Pragya, that, as we enjoy the chai, we enjoy the food, what is that one food you had the most in your initial days of Bombay? यार मुझे पता है you're expecting some vada pav kind of answer. वो आपको नहीं मिलेगा. So, normal. I'm a very, I love home food. So from the time I moved to Bombay, I've always been a home food person. There's no particular food that I ate when I moved to Bombay. But I've always been a healthy eater, so I've always eaten home cooked meals. I've been very lucky that I've always had fantastic cooks. क्योंकि ना बॉम्बे में आपकी लाइफ आपके हाउस हेल्प पे बहुत डिपेंडेंट होती है, स्पेशली when you're living alone. You're fully dependent on your cook and your maid. So I've had luckily very, very good cooks. So yeah, I've eaten home food, enjoyed that, worked very, very hard, traveled in rickshaws in the rains. So exciting times. प्रज्ञा को खुद के लिए क्या खाना बनाना पसंद है? ओह, बड़ा मुश्किल. खाना बनाना तो मैंने अभी अभी सीखा है लॉकडाउन में. आई वांट टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे पहले ना कुछ नहीं आता था. आई कुड ओनली कुक टू सेव माई लाइफ. वेरी बेसिक स्टफ लाइक राइस एंड दाल एंड एग्स. रोटी आई मेक डैम गुड, लाइक राउंड ब्यूटिफुल रोटीज. आई डोंट नो, बहुत सारी सिंपल चीज़ें नहीं आती, पर मुझे बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ आती है रोटी बनाना. But anyway, during lockdown, I started cooking, I started baking. But the one thing that I love to make for myself
could be eggs. Yeah, because that's the only thing I can make. But honestly, nothing. I'm not a good cook. I don't want to cook. I just love to eat. And I want to be fed. And I think you are fed very well, but मुझे मुझे सिर्फ खाना है. मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ. And one thing I love to make for myself is chai. कौन Masala सी chai. चाय, like मसाला चाय? Masala chai. Oh, I'm a damn good tea maker. हाँ. बट चाय का तो मुझे पता नहीं. आई हैव हर्ड के जो आपके जो को स्टार है अक्षय कुमार, उनके घर का खाना बहुत अच्छा होता है. एंड यू आर वर्किंग विद हिम, यू नो, यू हैव वर्कड विद हिम इन खेल खेल में. सो उसके बारे में कुछ मेमोरीज ऑन द सेट्स, यू नो, इफ यू कुड शेयर. ओह यस, मैं अभी सोच रही थी कि हमने सर के घर का खाना नहीं खाया. हमने खाया है. ओह वाओ, एक्चुअली सर ना बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी खाना खाते हैं. बहुत ही टेस्टी. सो हम लंदन में जब शूट कर रहे थे, सो देयर वर मेनी टाइम्स व्हेन वी वुड क्रेव फॉर यू नो घर का खाना. एंड वी वर सो मेनी एक्टर्स एंड लकीली Tapsi has a really good equation with Akshay sir. So she could just say, you know, one day if we felt like eating some roti sabzi, she would just be like, sir, मुझे ना सरसों का साग और मक्की की रोटी. Yeah, so she would just say, मेरे को ना साग खाने का मन हो रहा है सर, कल आप लेके आओ ना, because he has a house in London. He's like, ठीक है, I'll bring it. So, you know, we had some delicious home food when we were shooting in London. And other days he would get like healthy stuff, but I primarily remember this saag incident because, you know, हम लोग रोज grilled fish, grilled chicken and, you know, this salad and this. ये सब खा के ना थोड़े टाइम के बाद you just want to have roti sabzi, you know. And that he used to get, you know, but घर का taste, not like a hotel वाला. So he would get that. So it was amazing. और जब आप शूट करते हो, व्हेन यू आर शूटिंग अब्रॉड स्पेशली, आप साथ में कुछ कैरी करते हो, यू नो, दैट वन फूड आइटम व्हिच यू रियली प्रेफर, लाइक, यू नो, हैविंग विद योरसेल्फ. As such तो मैं food item carry नहीं करती हूँ. I just carry a lot of like nuts and stuff because that's your backup for when you're hungry and you don't have time to like order something, for something to reach you quickly. कभी time लगता तो you can have nuts as a backup. I always carry my protein bars because that's good for on the go. But other than that मैं इसे खाना नहीं carry करती हूँ. It's difficult to carry खाना ना. मतलब I don't carry. I only carry nuts and protein bars and these little things. Fruits तो मतलब not from India, but whatever, on the go. A vegetarian or a non-veg? Non-vegetarian. And what do you prefer in non-veg the most? Fish. और कभी खाने के लिए आपने ऐसी यानी मार खाई हो मॉम की बचपन में, कुछ ऐसा फूड आइटम के लिए यू मस्ट हैव क्राइड और, यू नो, क्रिब्ड अबाउट? मार तो कभी नहीं खाई है. मैंने कभी किसी से मार नहीं खाई है. टच वुड, थैंक गॉड. पर ना मुझे जो खाना होता था मुझे अलाउड था. आई रिमेंबर एज अ किड ना मुझे आई हैव अ स्वीट टूथ. तो मुझे गुलाब जामुन, रसमलाई ये सब बहुत ही पसंद थे. सो आई रिमेंबर ईटिंग लाइक 6 to 8 गुलाब जामुन इन वन गो. You know, but my mom never really said anything क्योंकि मैं बहुत दुबली पतली हुआ करती थी बचपन में. She's like, ठीक है, ज़्यादा खाएगी तो मोटी होगी. Anyway, we want her to put on weight, so let her eat. So sweets is the only thing I used to eat. बाकी normal food में I used to crib and complain, but sweets give me as much and I would eat as a पर kid. ऐसे, यू नो, कुछ उटपटांग हरकतें किए जस्ट टू, यू नो, हैव दैट स्पेशल मील इन योर प्लेट? ऐसा तो कुछ नहीं किया. खाने से रिलेटेड कुछ भी होता था. लाइक, यू नो, रात में अचानक से 1 बजे निकल जाना घर के बाहर और जस्ट खाने के लिए. लिव्ड इन अ बोर्डिंग स्कूल ना, तो ये सब मस्ती करने के ऑप्शन नहीं होते. स्कूल में आपने ऐसे कुछ किया नहीं, ऐसे स्टंट, यू नो, वेयर इन यू कुड? मीन्स रात को उठ के भूख लगती थी तो मतलब वी वुड हैव लाइक आवर फूड सेंट फ्रॉम होम दैट वी वुड ईट एंड यू नो, बट कुछ ऐसा इतना मिस्chievous नहीं था. कभी ऐसी पार्टीज की है जो एकदम से, यानी, यू नो, यू लाइक व्हेन यू रिकलेक्ट इट यू रियली फील लाइक, अच्छा मैंने ऐसे भी किया था, यू योरसेल्फ वंडर लाइक, अच्छा ऐसे था कुछ? प्रज्ञा बहुत शर्मा रही है. नहीं, शर्मा नहीं रही हूँ. नहीं ऑब्वियसली मैंने बचपन में कुछ नहीं किया था, बट बड़े होके ऑब्वियसली व्हेन यू हैव योर birthdays and stuff and you go overboard with, you know, celebrating,
देन ऑब्वियसली ऐसी काफ़ी चीज़ें हुई हैं जो कभी अभी सोच के ऐसा लगता है कि ओ शिट, वो भी दिन थे जब आप सुबह 6 बजे घर आए हो, यू नो, जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, यू वॉकड इन टू द हाउस एट दैट टाइम. सो या ये तो शुरू में बॉम्बे आने के बाद काफ़ी बार हुआ था. एंड यू नो, जब लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तब हम सुबह जाते थे सिगड़ी और मिनी पंजाब रोल्स खाने के लिए, यू नो. सो दोज डेज वी ऑल हैव गॉन थ्रू, यू नो. रात के 3 बजे 4 बजे हम बैठ के चिकन रोल खा रहे हैं, चिकन शवरमा खा रहे हैं. सो दैट इज तो नॉर्मल. That is good memory, I must Good say that, memory, yeah. yeah, fun But memory. कोई ऐसा, you know, South actor जिसका घर का खाना आपने खाया हो and you would be like, oh my God, you know, if I could really have his cook or his family over me. Oh at my yeah. place. So basically, I was shooting for a film and actually दो हैं, but okay, एक जिससे start करती हूँ. So basically, I was shooting for a film with an actor called Vishnu Manchu. तो वो बहुत बार ना घर से बहुत सारा खाना लेके आता था for like 10-15 of us, not just me. कि ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा एक इंसान के लिए एक्स्ट्रा फूड लेके आ जाता. He used to get food for 8-10 of us, you know, the director, producer, another actor, all of that. So 8-10 of us used to sit and eat together. He used to get amazing desserts made. उसका actually कुछ, I think there was a food joint also that he owned. So there was sometimes then he would get food from home, and sometimes he would get food from his restaurant, and it was mind blowing. तो I was so grateful working on that film को I was like कि यहाँ बहुत pampering हो रही है मेरे साथ, you know. And then in the same film we went to America to shoot as well. तो कभी off days होते थे तो he would take everybody out to eat over there. तो I was like अब ये picture चले ना चले, we don't know, because you never know the fate of a film. But I was very very happy with the experience because हर रोज़ इतने प्यार से रोज़ आपको कोई अच्छे से खाना खिलाता हो. It was amazing. So Vishnu Manchu's home food and his restaurant food was brilliant. और प्रज्ञा, खाने के लिए हम जैसे बात करें, I also have this one dish for you which is थोड़ा सा different. It's avocado sushi which I've got for you and I really want you to try this. Are you a sushi person? I am. Yeah, you are. And you enjoy I it? love sushi. Yeah. I love sushi. So let me just give this to you. Pragya, so you know, as we all love eating food, but kabhi kabar ऐसे hype हो जाता है that you know this food item is going to be very good, but then when you actually have it, एक embarrassment feel होता है, which is that food item? Embarrassment तो नहीं, but I remember going to this one place in Hyderabad which people really really love, you know, with the southern spices and everything. कि यहाँ पे तो you're going to be blown away कि इतना tasty खाना है and all that. So I remember going there and I could not handle the spice. And everybody's like, oh, we love it, it's mouth-wateringly tasty and all types. And I could not have one bite of anything because it was too spicy for me. So ऐसा हुआ है, embarrassing नहीं, but just not as exciting as I thought it would be. और ऐसी कौन सी चीज़ है जो यानी प्रज्ञा आपके लाइक फैंस को बोलेगी कि ट्राई करना चाहिए? इतनी सारी फेवरेट डिशेस हैं मेरी. देयर इज़ नॉट वन पर्टिकुलर फेवरेट डिश, बट अभी समर्स ख़त्म हुए हैं तो मुझे अभी सिर्फ समर मेन्यू याद आ रहा है. अभी मॉनसून मेन्यू मुझे किसी का भी पता नहीं है. सो आई लव दीज 2 cafes इन बॉम्बे. वन इज़ फार्मर्स कैफ़े एंड वन इज़, नाम बोल सकती हूँ, बूजी कैफ़े. It had to be like that expression. I could make it out. I was like, can I say it or not? Yeah. So yeah, I mean, I love these 2 cafes. They have amazing food, healthy, tasty, and their desserts are fabulous. I love from the mango menu. I love the mango French toast. It's delicious. So mango French toast is something I would highly recommend from Farmers. And bougie to matlab everything. I literally just yesterday I had the carrot walnut cake. It's so basic carrot walnut, but it was so good, you know. So maybe carrot cake, even the croissants, the almond croissant and chocolate croissant, so good at Bougie. So the croissants and carrot cake from Bougie and mango French toast from Farmers. Have you ever been caught while cheating on your meal and you're shooting for your movie?
यार एक बात बताऊँ, मेरे को ना मील्स में चीट करने में बिल्कुल गिल्टी फील नहीं होता, बिकॉज आई एम अदरवाइज सो डिसिप्लिन्ड एंड आई ईट हेल्दी कि मुझे कभी ओवरबोर्ड जाना भी रहता है ना, तो मैं परमिशन लेके चली जाती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता, बिकॉज या बट आई हैव it's difficult to stay consistent. I genuinely believe that you should listen to your body. If you really want to have something, have it. I don't kill myself, I don't punish myself from eating a little bit more. Luckily, touch wood, I have good metabolism, so my body really supports me in this. So I don't punish myself for eating extra, and I don't let anyone punish me. So even if I'm cheating, nobody can say anything to me. बट प्रज्ञा, ऐसे होता है कि यू नो व्हेन यू रियली हैव दिस थॉट ऑफ योलो बट इट टर्न्स आउट टू बी अ बीटी. What is BT? No, yeah, I don't have a bad trip ever. Yeah, I truly, totally only YOLO. I don't have no BTs for me. Really. बट दिस मंथ इज ऑल्सो स्पेशल, यू नो, और ये मंथ आपके लिए काफ़ी स्पेशल है, हम सबके लिए स्पेशल है जो फिटनेस एंथू है. एंड एज वी टॉक अबाउट दैट, इट्स योगा मंथ. एंड वी कुड सी दैट यू आर टच वुड वेरी फिट. सो आपके सीक्रेट आप कुछ रिवील करोगे कि ये कैसे आपने अचीव किया है? See, actually, na, I'm like this body type only. I don't have to do too much to remain the way I am, but I just genuinely enjoy working out. तो मुझे मज़ा आती है, like it's just positive energy when like you have that adrenaline rush after a workout, so I enjoy that. So that is why I'm so much into fitness, not because I absolutely need it, but just because I enjoy it. I enjoy doing yoga, I love dancing, I love going to the gym for a workout. So anything related to fitness is something I just enjoy. So yeah, that is how I And feel how fitness. does like yoga play a pivotal role in your life? You know, when we talk about yoga, since how many years you have been doing it? Oh God, it'll sound very hectic, but I'm actually doing yoga since my childhood. You know, because both my parents practiced yoga since like I was really really small. तो हमारे घर में रोज सुबह उठ के सूर्य नमस्कार होता रहता था, आसना चलते रहते थे. So I was forced to do it as a kid. और बचपन में ना समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. But as a kid I had started doing yoga. So yoga I used to really enjoy because you know you have to stretch and do all of that. So it's cute, fun activity. वो जब मुझसे वो प्राणायाम कराते थे तो तब मुझे एक बार थप्पड़ पड़ा था. यस, एक बार पड़ा था, पड़ाक, बिकॉज आई वाज जोकिंग. आई वाज लाइक, and I was just started singing or something, and I was like, focus, don't disturb other people. First time I think I got hit, one and only time, was when I was not doing pranayam. So yeah, yoga has been a part of my life since my childhood. I've been doing it always, but obviously after I grew up and like you know moved to different cities, then it wasn't so regular. But as much as possible I keep getting back to it, especially now in our stressful life and this busy schedule. I feel it's become even more important to take time out for a physical activity like yoga, because it's not just for physical fitness, it is also for you know to just keep you centered and calm and positive. So that is how yoga is a very important part of my life now again, because it's just needed. It's just a beautiful practice that you know I think if you can do every day, it'll help you remain a much more calmer and you know centered and positive person. So that is why I try to get back to yoga as much as I can. एंड हेलिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश, वहाँ की क्या ऐसी स्पेशलिटी थी इन टर्म्स ऑफ फूड जो आप यहाँ पर मुंबई में आकर मिस करते हो? ऐसा तो कुछ भी वहाँ पे इतना ऐसा ऑथेंटिक नहीं है जो यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि बॉम्बे में सब कुछ मिलता है. लकीली माई पेरेंट्स मूव टू बॉम्बे अ फ्यू ईयर्स अगो, तो अब मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई भी चीज़ पे मिस आउट करती हूँ, बिकॉज यू नो इवन द लोकल वेजिटेबल्स दैट वी यूज टू गेट ओवर देयर, लाइक द ग्रीन वेजीज, द भाजीज एंड ऑल ऑफ दैट, माई पेरेंट्स हैव फाउंड अ वे टू फाइंड इट इन बॉम्बे. तो नाउ देयर इज नथिंग दैट आई मिस एज सच, बिकॉज बॉम्बे हैज़ एवरीथिंग. सो या. And Pragya, as we talk about your career in South and also in Bollywood, how things are different, you know, because कई बार ऐसा सुनते हैं कि South में it's more about discipline, it's about versus Bollywood, it's quite chaotic and hectic. What are your thoughts on that? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, because I've done 2 films here, shot for one much earlier. This is the second film I'm shooting for. Hopefully this one will release.
Anyway, so talking about Bollywood and the South, I think the work environment in every film is different from the other. और हर फिल्म का अपना अलग ही एटमोसफियर होता है. तो कई बार ना साउथ की फिल्म भी थोड़ी केओटिक हो जाती हैं. बट मेरी जो फर्स्ट हिंदी फिल्म है, लाइक नाउ दैट आई एम डूइंग खेल खेल में, इट इज़ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, मोस्ट मेटिकुलस सेट दैट आई हैव एवर बिन ऑन. हर चीज़ टाइम पे होती है. एवरीथिंग इज़ बाय द क्लॉक. तो कहीं पे भी केओस या डिसऑर्गेनाइज्ड कुछ हो वैसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. कितने बार हम लोगों का फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट एट अ सर्टन टाइम एंड यू हैव टू फिनिश एट अ सर्टन टाइम, हम उसके पहले ही शूट फिनिश कर देते थे क्योंकि सब कुछ इतना टाइम से चल रहा है कि टाइम से पहले काम ख़त्म हो जाता था. सो आई फील इट्स ऑलवेज प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, फिल्म टू फिल्म, एंड आई डोंट थिंक इट इज़ अबाउट साउथ एंड हिंदी. Hindi is also as disciplined and as punctual as they say about South. But do you feel that Bollywood sometimes can make you feel lonely as compared to other industries because it is chaotic and there are so many faces just striving to be on top? Lonely, definitely not. Luckily, I feel loneliness is about the people you surround yourself with, and I have been very lucky that I'm surrounded by some really amazing friends in this city, some of them even belonging to the same industry. तो ऐसा भी नहीं है कि आई एम फ्रेंड्स विद सम पीपल हु आर नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, विच इज़ वाई आई एम हैप्पी एंड पॉजिटिव. आप उनके साथ भी, मतलब कि मेरी उन लोगों के साथ भी फ्रेंडशिप है जो इंडस्ट्री से हैं, सो दे अंडरस्टैंड योर जर्नी वेयर यू आर एट एंड ऑल ऑफ दैट. So I don't think I feel lonely in this city at all, not personally, not professionally. I feel I'm very, very cushioned. I live with my family, I have great set of friends and life is great. And I have to ask you this before I let you go also, Pragya, that खाने की तो हमने काफ़ी बातचीत की है और खेल खेल में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट आफ्टर खेल खेल में प्रज्ञा किस चीज़ पर फोकस करना चाहती है? So I am doing a film in the South right now, which is very exciting. Fingers crossed. I hope it all goes well. उसके बारे में हम और बाकी जब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आएगी तब बात करेंगे. And there's another thing in the pipeline which I'm very excited about. So I'm also waiting for an announcement of the second project. So yeah. Lovely chatting with you, Pragya. Lovely chatting with you. It was good chatting with you, and I could see कि आपने बहुत कुछ खाया है. I'm so glad. Yeah, but anything for your fans out there, you really want them to know कि प्रज्ञा जायसवाल और क्या करना चाहती है लाइफ में? और क्या करना चाहती है लाइफ में? मैं तो बस अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग और कोई स्पेशल प्लान्स नहीं है. आई जस्ट वांट टू डू वेल इन लाइफ. आई वांट टू एंटरटेन माय ऑडियंस. आई वांट टू वर्क डैम हार्ड, बी सक्सेसफुल and make them proud of me, especially my fans. I hope I can entertain them and make them feel really happy.